So let's continue with the solved examples. Sorry for the interruption as there were the network problem. So let's then also we will continue as there are the solved examples which are remaining only. So let's continue with the solved examples which are given here. So तो चलिए देखते हैं कि सॉल्व एग्जांपल्स में क्या पूछा गया है. सपोज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो हमें यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है. सो जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने देखा था दैट इज वीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच. सो आर प्लस एच यहाँ पर क्या होगा दैट इज आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 6,400 plus 35,780, which will be 42,180 into 10 raised to 3 meter. As we have converted it into the meter, that 1 kilometer is equals to 1000 meter. So V is equals to G value we have put here, that is 6.67 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 raised to 24, that is the mass of the earth, and r plus h value which we are having, that is the 42,180 into 10 raised to 3 meter. So after doing the calculations and all, we are getting that the velocity will be 3.08 kilometer per second. Next solved example which we have given here. In the previous example, how much time the satellite will take to complete one revolution around the earth. So मतलब कि जो सैटेलाइट जो कि लॉन्च की थी हमने, जो कि 35,780 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अबोव थी. सो कितना टाइम वो लेगी. सो द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन विच वी हैव टू कैलकुलेट. सो वेलोसिटी हमें अभी पता चल गई दैट इज 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड हाइट भी हमें पता है. सो we can use, suppose the satellite takes t seconds to complete one revolution around the earth. The distance traveled during this one revolution is equal to the circumference of the circular orbit. और जो कि टाइम वो लेगी to complete the one revolution, that is of the circular orbit, which will be equal to the circumference of the circular orbit. और जो circumference of the circle होता है that is 2 pi r. So if r is the radius of the orbit, the satellite will travel a distance 2 pi r during one revolution. Thus, the time required for one complete revolution can be obtained as v is equals to distance upon time. That is the velocity is equals to distance upon time formula which we have studied earlier. So distance यहाँ पर क्या होगा? That is the circumference upon time. So which will be 2 pi r upon t. So time t is equals to 2 pi r upon v, which is equals to 2 pi. Radius will be r plus h, that is the radius of the earth plus the height. So it will be, hello, hi Yograj, hello. सो यहाँ पर जो टाइम टी निकल के आएगा दैट विल बी 86,003.38 लेकिन हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा दैट इज इनटू द आवर्स एंड द मिनट्स. सो इट विल बी 23 आवर्स डॉट 89 minutes. So 89, that is the 23.89 hours. So it will be 23 hours and 54 minutes after the conversion into the hours and to the minutes. So here, since the velocity is taken in the unit of the kilometer per second, radius is also taken in the unit of the kilometer. This we have to keep in mind. नेक्स्ट जो कि हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो देख लिए. नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर दैट इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जो कि हमने पीएसएलवी जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि हमने देखा. सो ऐसे अलग अलग जो लॉन्च व्हीकल्स है वो यूज किए जाते हैं. सो लॉन्च व्हीकल्स का बेसिकली यूज क्या होता है, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, उसका फंक्शनिंग कैसा है, वो हम इस यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखेंगे. So satellite launch vehicle. Satellite launch vehicles are used to place the satellites in their specific orbits. So satellite launch vehicles जो होते हैं वो इसका यूज किया जाता है कि सैटेलाइट को उनके स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए. So the functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law. Newton's third law of motion क्या कहता है कि every action force has an equal and opposite reaction force. On the basis of the Newton's third law of motion, we are using the satellite launch vehicle to place the satellites onto their specific orbits.
So the launch vehicle uses specific type of the fuel. Gas produced due to the combustion of the fuel expands due to the high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle which drives the vehicle high into the space. Uh, ओके, अगर आपके ये चैप्टर जो एग्जाम में नहीं आ रहा है, सो बेसिकली मतलब स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं होगा लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो ये चैप्टर होगा. सो दैट्स व्हाई मतलब ये एक बार हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर. So, the gas produced by due to the combustion of the fuel expands due to the its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at the rear side of the launch vehicle. As a reaction of this, a thrust acts on the vehicle, which drives the vehicle high into the space. और जो thrust जो कि downwards act होता है, जिसकी वजह से जो vehicle होता है वो highly यहाँ पर space में जाता है. ओके, अगर जो एग्जाम में नहीं आ रहा है सो लेट वी विल बी स्टडिंग दिस एज मतलब ये जो यहाँ पर सिलेबस में है सो और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि अगर आप आगे जो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह स्पेस रिसर्च में अगर आप जाएंगे सो वहां पर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड जो बेसिक्स वगैरह है सो वो वहां पर यूजफुल होंगे. सो वी विल बी सीइंग इट. और मतलब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है सो बहुत मतलब छोटा चैप्टर है एज इट इज नॉट टू मच लेंथी चैप्टर जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स और वो जो हमने देखा था. सो इतना बड़ा चैप्टर ये नहीं है. So the structure of the launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit. और जो वेट होता है लॉन्च व्हीकल का वो डिसाइड होता है कि सैटेलाइट का वेट कितना है और सैटेलाइट ऑर्बिट कौन से इसमें जाने वाली है. So, the fuel of the vehicle also depends on these factors. The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it. To overcome this problem, launch vehicles with more than one stage are used. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. For example, consider a launch vehicle having the two stages. For launching the vehicle, the fuel and the engine in the first stage are used. This imparts a specific velocity to the vehicle and takes it to the certain height. Once the fuel in the first stage is exhausted, the fuel tank, the emptied fuel tank and the engine are detached from the main body of the vehicle and fall either into a sea or on an unpopulated land. As a fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. However, the vehicle now contains only one, that is the second stage. The weight now being reduced, the vehicle can move with a higher speed. Almost all the vehicles are made up of the either two or more stages. As an example, the structure of the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV developed by the ISRO of an India is shown in figure 10.5a. सो चलिए देख लेते हैं फिगर से. ये जो यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए थे सो दैट वी विल बी स्टडिंग अकॉर्डिंग टू विद दिस फिगर. सो यहाँ पर फिगर में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लेस फॉर द सैटेलाइट यहाँ पर होती है. फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल, थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, सेकंड स्टेज यूजिंग द लिक्विड फ्यूल, फर्स्ट स्टेज यूजिंग द सॉलिड फ्यूल, इंजन यूजिंग द सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट. सो यहाँ पर जब ये व्हीकल लॉन्च होता है सो फर्स्ट स्टेज में जो सॉलिड फ्यूल होता है सो वो यूटिलाइज्ड होता है फॉर मूविंग टुवर्ड्स द अप्लाइंग द थ्रस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द स्पेस. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल होता है सो दैट विल बी बर्न और इग्नाइट होता है एंड ड्यू टू विच आफ्टर दिस फ्यूल गेट्स बर्न और ये जो टैंक एम्प्टी होती है सो ये डिटैच हो जाती है इस लॉन्च व्हीकल से. नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज में जो लिक्विड फ्यूल है वो इग्नाइट होता है. जैसे ही मतलब वेट कम हो जाता है लॉन्च व्हीकल का सो वो इग्नाइट होता है और फास्ट स्पीड में मूव होता है. So similarly, the different stages of the fuels are utilized for increasing the speed of the launch vehicle and to make the or and to place the satellite into its particular orbit using this launch vehicle.
So the launch vehicles are costly because they can be used only once. USA has therefore developed space shuttle which returns to the earth except for the fuel tank and can be reused in the multiple launches. So launch vehicle जो होते हैं वो एक बार ही यूज होते हैं, यूज्ड ओनली वंस, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। और इसीलिए यूएसए ने स्पेस शटल करके डेवलप किया है, जो कि फ्यूल टैंक जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, लेकिन जो लॉन्चर होता है वो वापस रिटर्न कर जाता है स्पेस अर्थ पे। So always remember, the rocket, a type of the firecracker used in the Diwali, is also a sort of the launcher. In this rocket, the fuel is ignited using a fuse and the rocket is projected into the sky just like a satellite launcher. Similarly, if a balloon is blown and released with its end, the air in the balloon is forcefully ejected and the balloon is pushed into the opposite direction. This can be explained using the Newton's third law of motion. और जो दिवाली में जो हम रॉकेट यूज करते हैं एज अ फायर क्रैकर, सो वो भी सिमिलरली एज अ लॉन्चर का जो हमने एग्जांपल यहाँ पर देखा, सो उसी प्रिंसिपल से ये वर्क करते हैं और उसमें भी जो यूज होती कंसेप्ट दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टिल अगर आपके कुछ यहाँ पर डाउट्स होंगे सो यू कैन आस्क रिगार्डिंग विद दिस। सॉरी। सो स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ जो कि नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल बी सी। सो स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ। So, as we have seen above, the artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. So, जो artificial satellite जो use किए जाते हैं, so उसकी वजह से हमारी life जो है वो enrich हो रही है. However, in the previous standard, we have learned about how the telescopes abroad, artificial satellites are used to gather information about the various objects in the universe. Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. In this mission, spacecrafts are sent to the nearby objects in the solar system to observe them more closely. New information has been obtained from the such missions and it's helpful to us to understand and creation and evolution of our solar system. और जो कि स्पेस मिशन जो कि अवे फ्रॉम द अर्थ जो कि स्पेस में जाके जो मिशंस परफॉर्म हुए अभी तक, सो उसकी मदद मदद से जो कि सोलर सिस्टम में अलग अलग जो इवोल्यूशन होते हैं, जो कि फेनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं, सो उसकी जो अच्छे तरीके से क्लोजली जो स्टडी है वो पॉसिबल हो सकी है। So for such missions, the spacecrafts must escape from the Earth's gravitational force to travel into the outer space. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than the escape velocity of the Earth as we learned in the chapter of gravity. Escape velocity on the planet can be obtained using the following formula, that is V escape is equals to under root of 2gm upon r. So जो ये क्लोजली जो स्टडी करनी है, सो उसके लिए हमें जो सैटेलाइट और जो टेलीस्कोप्स वगैरह स्पेसक्राफ्ट है, सो उसे हमें भेजना पड़ेगा आउटर स्पेस में। सो ये स्टडी वहां से क्लोजली पॉसिबल हो सकेगी। सो टू अचीव दैट, जो कि हमें स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो आउटर स्पेस में भेजने हैं, सो उसके लिए हमें एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी और वो जो है दैट इज द एस्केप वेलोसिटी विच इज यूज्ड। और इसका एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है जो कि हमने स्टडी किया था ग्रेविटेशन चैप्टर में, सो वी वेलोसिटी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 gm अपॉन आर। अगेन जी जो है कांस्टेंट है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। So all these are the constant values which can we can put here and we can find the escape velocity which is 11.18 kilometer per second. Thus, if a spacecraft is to escape the Earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have the minimum velocity of 11.2 kilometer per second. So अगर जो spacecraft को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से escape करना होगा, so उसको जो minimum velocity जो लगेगी that is the escape velocity which is 11.2 kilometer per second. नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो करके हमें कुछ दिया है जो हम देखेंगे। So the astronomical object closest to us is the moon. Light takes 1 second to reach from the moon to the earth. It means that if we travel with the speed of the light, it will take 1 second to reach the moon. However, since a spacecraft travels at much smaller speed, it takes longer time to reach the moon. Shortest time taken by the spacecraft to reach the moon so far is 8 hours and 36 minutes. So जब हम लाइट की स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से है, सो अगर हम उस स्पीड से अगर ट्रेवल करें, सो हमें मून पर पहुंचने के लिए 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट जो कि स्मॉलर स्पीड से ट्रैवल करते हैं, सो उसको जो टाइम लगता है अब तक का शॉर्टेस्ट टाइम जो कि रिकॉर्ड किया गया है वो है 8 hours 36 minutes, जो कि
अब तक recorded, that is the shortest time which is taken by the spacecraft to reach to the moon. नेक्स्ट आगे जो है हमें मून के मिशंस और मार्स के मिशंस के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन से मून मिशंस जो कि हो गए हैं और मार्स मिशन। वेट 1 मिनट। चलिए आगे कंटिन्यू करते मून मिशन। Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to the object in the solar system were the missions to the moon. Such missions have so far been executed by the USA, Soviet Union, European countries, China, Japan, and India. Moon का जो मिशन था, moon जो है, it is the closest astronomical object which is present from the Earth surface. तो सबसे पहले जो मून के जो मिशंस थे, वो सोलर सिस्टम में जो कैरी आउट किए गए, दैट इज रिगार्डिंग विद द मून। सो सच मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी जो जिन्होंने ये मिशंस एग्जीक्यूट किए? यूएसए हो गई, सोवियत यूनियन हो गई, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना हो गया, जापान एंड ऑल्सो इंडिया।
The spacecrafts in the Luna series sent by the Soviet Union reached near the moon. Luna 2, launched in 1959, was the first such craft. After that, till 1975, 15 spacecrafts made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density, and radiations. सो सबसे पहले जो कि लूना 2 जो लॉन्च हुआ था 1959 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट और उसके बाद 1975 में 15 स्पेसक्राफ्ट्स जो कि वो भेजे गए थे और जिसकी वजह से केमिकल एनालिसिस अलग अलग जो कि ग्रेविटी डेंसिटी एंड रेडिएशंस मून के उसके बारे में स्टडी किया गया लास्ट फोर क्राफ्ट्स इवन लैंडेड ऑन द मून एंड ब्रॉट द सैंपल्स ऑफ द स्टोन्स ऑन द मून फॉर एनालिसिस इन द लेबोरेटरीज और लास्ट के जो फोर क्राफ्ट थे फोर स्पेसक्राफ्ट सो वो लैंड भी हुए मून पे और उन्होंने मून पे से कुछ स्टोन्स के सैंपल्स भी लेबोरेटरीज के लिए वहां से लेके आए ऑल दिस मिशंस वेर अनमैन्ड और ये सारे जो मिशंस थे दैट देयर वेर नो ह्यूमन इंटरफेस ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें नहीं था सो अमेरिका also executed moon missions from 1962 to 1972 the speciality of these missions was that some of these were manned missions और अमेरिका के जो मून के मिशंस थे वो 1962 से 1972 तक थे सो उसमें कुछ ऐसे मिशंस भी थे कि जिसमें मैन भी था मतलब मैन also has went to the space or the moon in the spacecraft in July 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon. In 2008, Indian Space Research Organization, that is the ISRO, successfully launched Chandrayaan and placed it in an orbit into an orbit around the moon. It sent useful information to the Earth for about a year. और एक साल तक जो कि इसरो का जो लॉन्च किया था इसरो इसरो ने दैट इज चंद्रयान 1 सो उसने भी जो अलग अलग ऑर्बिट से रिलेटेड मून के जो मतलब मून से जो इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड दैट इज रिगार्डिंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल सो दैट हैज सेंट फॉर अबाउट अ ईयर सो the most important discovery made during the mission was the presence of the water on the moon surface. India was the first country to discover this. और जो इंडिया ने जो सबसे पहले मून पर वाटर का प्रेजेंस है ऐसा जो बताया that was the by the country India which was the first country to discover this. नेक्स्ट वेयर द दिस वेयर सम ऑफ द मून मिशन नेक्स्ट जो थे वो मार्स के मिशन थे क्योंकि अगर हम बात करें जो कि अभी हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें सो अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो कि है मून और जो प्लेनेट सबसे नियरेस्ट है दैट इज द मार्स सो उसकी वजह से मार्स मिशन सबसे पहले ट्राई किए गए नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स वही जो मैंने आपको अभी बताया मेनी नेशन सेंड स्पेसक्राफ्ट्स टू द मार्स मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वेर अनसक्सेसफुल और हाफ से ज्यादा जो मिशंस थे वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि मार्स का मिशन डिफिकल्ट था हाउएवर इसरो's परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट लेकिन जो इसरो ने जो मिशन परफॉर्म किया सो दैट वाज द रिमार्केबल वन हाउएवर इसरो's परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल एंड वी मस्ट ऑल have to proud of it the spacecraft mangalyaan made by the ISRO using minimum expenses was launched in the November 2013 and was placed into orbit around the Mars in the September 2014. So इसके related एक जो मिशन मंगल करके जो मूवी आई थी so that was also regarding with this मंगलयान जो कि स्पेस मिशन इसरो ने परफॉर्म किया था सो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी होगी मिशन मंगल सो आप वो देख सकते हैं सो आपको पता चलेगा कि मंगलयान का मिशन कैसे पॉसिबल हुआ था और कैसे उन्होंने कैरिड आउट किया था So it was carried out in the September 2014. So it obtained very useful information at the surface of the Mars and atmosphere around it. So different जो कि मार्स की प्रॉपर्टीज उसकी हो गई सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली यहाँ पर कुछ रिनोन जो कि स्पेस में गए हुए जो कि डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स है सो उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है सो चलिए देखते हैं राकेश शर्मा was the first Indian to travel to the space he went into the space along with two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program he stayed in the space for the 8 days Next was the Kalpana Chawla. Kalpana Chawla obtained her engineering in the aeronautics degree from the Punjab and in 1988 obtained her doctorate from the University of the Colorado. She was in space for the 336 hours during research mission. While returning to the Earth from the space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana perished.
Sunita Williams traveled to the International Space Station in the Space Shuttle Discovery in 2006. She worked for the 29 hours outside the space station. She created a record by staying for the 192 days in the space. So these were some of the information regarding with this renowned astronauts. Missions to the other planets. Many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions, the spacecrafts orbited the planet. Some landed on the planet and some just passed near the planet and observed them. Additionally, spacecrafts have been sent to observe asteroids and comets, and they have been successfully collected some dust and stones from the asteroids and brought them back on the Earth. We are getting useful, very useful information from all these missions, carrying our concepts and the origin and evolution of the solar system. और अलग अलग जो कि मिशंस अदर प्लैनेट्स के लिए भी कैरियड आउट किए गए, कुछ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की स्टडी के लिए भी यहाँ पर कैरियड आउट किए गए, लेकिन वो उसमें से कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ प्लैनेट्स पर पहुंचे ही नहीं, कुछ प्लैनेट्स पर पहुंचे लेकिन उनका कनेक्शन लॉस हो गया। और जो जब तक अभी तक जो इंफॉर्मेशन वगैरह हमें मिली, सो डिफरेंट डिफरेंट जो कि रिसर्च वगैरह यहाँ पर हुए। हेलो, हाय वीर शर्मा, हेलो। सो नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। सो इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी के यहाँ पर मतलब क्या इवोल्यूशन है, क्या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। So, India also has made launch vehicles have been developed to put satellites having the weight up to 2500 kg। और अलग अलग जो कि लॉन्च व्हीकल्स जो इंडिया ने डेवलप किए हैं, सो जिसकी मदद से जो कि वेट है सैटेलाइट्स का 2500 केजी के अराउंड, सो इसको हम लॉन्च कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में हम लॉन्च कर सकते हैं। सो पीएसएलवी एंड जीएसएलवी आर द टू इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स। तो और पीएसएलवी और जीएसएलवी दो इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स जो कि यूज किए जाते हैं मेनली। The scientific and technological feats achieved by the India in this first field have a significant contribution to the national and social development. INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunication, television broadcasting, and meteorological services. Availability of the television, telephone, and internet service all over the nation has been possible due to these satellites only. EduSat satellite in this series is used specially in the field of the education। और एड्यूसैट जो सैटेलाइट है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एजुकेशन फील्ड पर्पस। INSAT and GSAT also used as the for the telecommunication, television broadcasting और meteorological services के लिए इनका यूज किया जाता है। IRS satellite series is working for the monitoring and management of the natural resources and disaster management। और जो IRS की जो सीरीज है सैटेलाइट की दैट इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट which is basically used for the natural monitoring management, natural resources or disaster management to exactly locate position of the any place on the earth's surface in terms of its precise latitude and longitude। the IRNSS satellite series has been established। और स्पेसिफिक अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अगर पोजीशन की स्टडी करनी है, सो IRNSS सैटेलाइट सीरीज जो कि इस्टेब्लिश की गई है वो यूजफुल यहाँ पर रही है। नेक्स्ट इज दैट इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट यहाँ पर दिया है। सो इसके बारे में देख रहा भाई। So Vikram Sarabhai is considered as the father of Indian space program. His efforts led to the foundation of the Physical Research Laboratory (PRL) at Ahmedabad. In 1962, Indian government constituted Indian National Committee for the Space Research under his championship, and first satellite launch center was established at Thumba in 1963। The launching of the India's first satellite Aryabhatta into the space was the result of his efforts। और इनकी जो एफर्ट्स थे कि फर्स्ट सैटेलाइट जो कि आर्यभट्ट था वो स्पेस में इस्टेब्लिश्ड वहां पर किया गया। सो ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो है एक मेजर इन्होंने रोल प्ले किया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इसरो। Next is the concept regarding with the space debris and its management। Debris that is the waste। सो स्पेस में भी जो वेस्ट है, हम सोचते हैं कि जो वेस्ट है दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब हमारे जो अर्थ सरफेस है वहीं पर वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट है, लेकिन डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस आर आल्सो प्रेजेंट देयर। स्पेस में भी वेस्ट है, तो कौन सा है वो हम देखते हैं।
In addition to the artificial satellites, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, parts of the launcher detached during the launching and debris generated due to the collision of a satellite with the other satellite or any other object in the space. According to one estimation made in 2016, there are about 2 crore pieces of the length more than 1 centimeter revolving around the Earth. All this is nothing but the debris in the space. और जो कि 2016 की एक रिसर्च से ये पता चला है कि 2 करोड़ से ज्यादा पीसेस ऑफ द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर और मोर जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अभी भी अराउंड द अर्थ. So these are all the space debris which are present in the space. These debris can be harmful to the artificial satellites. It can collide with the other satellites or the spacecrafts and can damage them. और ये जो debris जो कि harmful artificial satellite जो है, so वो affect कर सकती है or due to the collision of them, so that can damage to the spacecrafts also. This debris is increasing day by day. Soon it will difficult to launch the new spacecrafts. It is therefore very essential to manage the debris. So soon it will be difficult to launch new spacecrafts. It is therefore very essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will have a solution for this problem and the future satellites and spacecrafts will not be in danger anymore. और ये जो स्पेस डेब्रिज है इसकी वजह से आगे जो कि हमें सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए भी प्रॉब्लम आ सकता है जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक हो सकता है टू लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट इनटू द स्पेस regarding with the debris. सो ये जो है ये बोर्ड का जो है ये चैप्टर 10 है दैट इज साइंस 1 का क्लास 10 का दैट इज स्पेस मिशंस. टुडे इज माय प्रैक्टिस पेपर. प्रैक्टिस पेपर मतलब आपका मतलब प्रीलिम का पेपर है ये? कौन से बोर्ड का चैप्टर है? अच्छा ये है महाराष्ट्र बोर्ड का. दिस इज ऑफ द महाराष्ट्र बोर्ड. सो आपका प्रैक्टिस पेपर मतलब प्रीलिम्स चालू है क्या आपके? दिस इज द चैप्टर ऑफ द महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th. और दैट हियर ओनली मतलब हमने यहाँ पर क्लास 10 का जो कि सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर खत्म कर लिया है. दैट दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10 साइंस 1. हेलो. हाय समर्थ काटे. हेलो. फिर अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड सो यू कैन आस्क इन द लाइव चैट रिगार्डिंग विद दैट और एल्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे सो यू कैन आस्क. ओके ओके. ओके समर्थ. सो मतलब आपके जो अगर मतलब विलियम का पेपर है या कौन सा आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं? सो अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे सो मैं लाइव में आपके डाउट्स लूंगा. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग with this chapter or any of the chapter of the class 10 science 1 so you can ask in the comment.
हेलो, हाय अंकित, हेलो। अच्छा, आपका प्रीलियम का पेपर है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। So if you are having any doubt regarding with your exam preparation and all, so I will be coming live regarding with your doubt solving. Still अगर कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर से कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे, सो यू कैन कमेंट इन दिस comment box in this live chat, or else you can comment in this video. So thank you everyone for joining. We will stop here. If you are having any doubts, then you can comment in the comment box of this video. So thank you everyone for joining. Thank you.